Hello everyone, it's mapping time. So we'll cover the plateaus of India in this video. So take out your atlas and start mapping. Alright, let's begin. Now before we start mapping, let us quickly understand what exactly is a plateau. Now in geology and physical geography, a plateau, also called a high plain or tableland, is an area of highland usually consisting of relatively flat terrain that is raised significantly above the surrounding area, often with one or more sides with steep slopes. तो बेसिकली हमने समझा क्या है, अगर हम माउंटेन रेंजेस को देखें तो एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस होती हैं जहाँ पे एक पीक होती है और एक वैली होती है. बट अगर प्लेटो की बात करें तो ये फ्लैट एरियाज होते हैं, फ्लैट एरियाज अबव द प्लेन्स. तो एक हाइट पे फ्लैट एरियाज हैं विद स्टीप स्लोप्स, और ये अपलिफ्टेड हाईलैंड्स जो हैं इनको प्लेटो बोलते हैं. Now, the plateaus can be formed by a number of processes, including the upwelling of volcanic magma, extrusion of lava, and erosion by water and glaciers. तो हमें इतना पता है कि जो मैग्मा और लावा निकलता था इन अर्लियर जियोलॉजिकल पीरियड्स, वो कंपाइल होता गया और वो ठंडा होता गया एंड दे बिकेम प्लेटोज. राइट. तो दूसरा केस ऐसा बना कि अगर कोई अपलिफ्टेड लैंड है और वहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है तो वो रिवर इरोजन करते करते इसको फ्लैट कर देगी और दे वुड बिकम प्लेटोज. तो ये एक दिन 5 दिन में नहीं होता, इट टेक्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट सच लैंडफॉर्म्स, और ये बहुत ही बड़ा एक जियोलॉजिकल स्केल है. इट हैज़ इवॉल्व्ड इन अ वे एज वी सी इट टुडे. Now, the plateaus are classified according to their surrounding environment as intermontane, piedmont, or continental. Basically, India mein plateaus are generally found in the central part, which is Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and the eastern part of Jharkhand, etc., and a little bit in the northeastern part and in southern part. Plateaus are generally not found in the northern region because यहाँ पे mountains आ जाते हैं, the Himalayas. And then there are the northern plains, the Ganga plains, Indus plains, there are the deserts. यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा plains है, इनकी वजह से यहाँ पे plateaus नहीं है. So right, let us now quickly map the plateaus of India. And it is really important that we know the relative position of these plateaus, because एक visual memory होनी बहुत ज़रूरी है एग्जाम में recall करने के लिए. Because even if we don't know the answer, but एक rough idea हो where the plateau or the terrain is located, उसके basis पे हम काफ़ी सारे questions सही attempt कर सकते हैं. Right, so let's map the plateau of India. The first one that we'll look at is the Mewar Plateau. ये अरावली hills के eastern side में है. So this is the Mewar Plateau. The second one, and the most predominant in Madhya Pradesh, is the Malwa Plateau. Now you should also know that Malwa Plateau के ऊपर यहाँ पर आते हैं Vindhyan Scarplands. Now besides the Malwa Plateau and the Vindhyan Scarplands are the Bundelkhand Plateau. ना बुंदेलखंड के पास में ही एमपी में एक और प्लेटो आता है विच इज़ द बाघेलखंड प्लेटो. और मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा रेंजेस के नीचे आते हैं बैतुल प्लेटो. राइट. सो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे हजारीबाग प्लेटो. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देखेंगे मेघालय प्लेटो. उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटोज, वेरी रिच इन मिनरल्स, छोटा नागपुर प्लेटो. फिर बारी आती है छत्तीसगढ़ की. छत्तीसगढ़ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटो है, बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, विच इज़ दी दंडकारण्य बस्तर प्लेटो. उसके बाद साउथ इंडिया में हमें दो प्लेटो देखने. सबसे पहला है कर्नाटका प्लेटो. और फाइनली एक छोटा सा प्लेटो आता है जिसका नाम है बेंगलोर प्लेटो.
which can also be known as Bengaluru Plateau. Right, so basically ये थी इंडिया में plateaus की mapping. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.